We are finally in Siliguri and leaving for Darjeeling. It's around 12. कल हम लोग बहुत लेट पहुँचे थे at around 11. मैंने ज़रा शूट किया नहीं क्योंकि कुछ था नहीं रात को दिखाने के लिए. So the real journey starts today. We will have lot of adventure. आज हम लोग दार्जिलिंग जा रहे हैं. कल हम लोग पहुँचेंगे गैंगटॉक. आज दार्जिलिंग में थोड़ा चिल करेंगे, फिर देखते हैं. Sandy, सुनाई दे रहा है? Okay, all good then. So all of us are connected via पुरानी M10. Finally we started. शायद 4-5 बजे दार्जिलिंग पहुँचेंगे. आराम से जाएंगे. So guys, we are on our way to Darjeeling. ये है एक चेक पोस्ट and दार्जिलिंग की पहाड़ ऑलरेडी दिखनी शुरू हो गई है. I don't know if camera is able to see or not, but it's there. Guys, just check out these mountains. God, looking so nice. ये रोड इतना अच्छा है ना, एकदम स्ट्रेट एंड सामने माउंटेन्स. खींचना है. So guys, we are in Kansheong now and going towards दार्जिलिंग. ज़्यादा दूर नहीं है, अराउंड 30 किलोमीटर्स है फ्रॉम हियर. द व्यू इज़ रियली अमेजिंग फ्रॉम हियर. हमने अभी अपना लंच कर लिया. यहाँ पे एक कैफ़े में रुके थे. आप पुट सम स्टोरीज ऑन इंस्टाग्राम. यू गाइज कैन गो एंड चेक इट आउट. ऊपर मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा. वो क्या मस्त है ना ये. टॉय ट्रेन अभी चलती है कि नहीं चलती? टॉय ट्रेन्स शायद बंद हो गया है ना. ये जो साइड में आपको ट्रैक दिख रहा है, दिस इज़ फॉर टॉय ट्रेन. अभी शायद वो चलती नहीं है. सो दिस इज़ ए मोनेस्ट्री. पता नहीं नाम क्या है यार. इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. गाइस, जस्ट लुक एट दिस व्यू. यहाँ पे इतना अच्छा सनसेट हो रहा है ना, कितना मस्त लग रहा है देखने में. लुकिंग अमेजिंग. Wow man, looking amazing. So guys, we are at the Goom station. ये मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है. इतना ट्रैफिक है यहाँ पे भाई. After crossing this heavy traffic, we reached our hotel, got freshened up and went outside to hit the streets. We always wanted to visit this famous cafe or bakery known as Glenary's, and trust me guys, we had an amazing night out there. Good food, good music and some booze for the people who love it. By the way, Glenary's is one of the oldest confectionaries in Darjeeling and it is there from British time. You will get some amazing bakery stuff out there. Definitely recommended for anyone visiting Darjeeling. Good morning guys. So we are in Darjeeling right now. कल हम लोग दार्जिलिंग आए थे and we went to a beautiful cafe out here. I guess you have already seen that video. This is the place that we are staying in right now. This is the hotel that we are staying in. I will put the name and the description of the hotel comment section below or in the description section below. So let me show you the view from here that we get from the balcony. So can you see that snow-peaked mountain? I'll just try to zoom in and show you. That is Kanchenjunga peak that we can see. It's fully covered with snow. And this is the beautiful city of Darjeeling out here. We get an amazing view. We got the sunrise from here. I have put the time lapse as well. मैंने कुछ drone shots भी लिए हैं जो आपने देखा होगा already. And this is the balcony. Basically this is a common sitting area. The rooms doesn't have like separate balconies, but it's really beautiful. And this is Sandeepan. Hi. ये शायद 1 साल बाद राइड पे निकला है हम लोग के साथ. Almost 1 साल. Yes. Last time हम लोग का कौन से vlog में थे? I guess Lansdowne. Lansdowne, yeah. Yes. That was Lansdowne. Yes. और
Here is Dhairya. इसको तो पता ही है, ये बंदा तो हर ब्लॉग में दिख जाता है मेरे. And this is the room that we have got. थोड़ा गंदा हो गया अभी रूम, कुछ नहीं कर सकते. Because writer's room, nothing to do. Writer's का room. This is a big room actually. We have the heater and this is the bathroom. It's pretty nice. हम लोग को around 2000 rupees per room के हिसाब से मिला था. So like 2000 ऐसे ही था ना? 1000 per head. 1000 per head. Yeah, it's cool. ये है gallery. You can see. बीच में एक अच्छा सा पेड़ भी है and there's a rooftop. Overall, it's a beautiful hotel. You guys can definitely come and check it out. I'll put the details of the hotel in the description section below.